Now, the lesson's title is Attitude is Altitude. We have to understand why this title is given to this lesson. It means we have to understand the vocabulary of this title. We are having two main words here. They are they are attitude and altitude. Two words are there. So what are these words? What is this attitude? What is this altitude? Attitude is the condition of our mind. The condition of our mind. Okay. It can be two ways. We can have a positive intuition, we can have a negative intuition. For example, most of you are suffering from these languages. Okay. Mainly the three languages: Telugu, Hindi, English. Okay. These are causing a lot of torment to the students. All of you are suffering from this phobia. Phobia means fear. We're having a phobia. तेलुगु फोबिया, तेलुगु नहीं आता करके डर. हिंदी फोबिया, हिंदी नहीं आता बोल के एक डर. और इंग्लिश फोबिया. And we should understand that we are English medium. We cannot forget that we are English medium. It means we have to be talking fluently in English. There is no such language called third class language, fourth class language, fifth class English, sixth class English, ninth class English, intermediate English, degree English, nothing. English is English. General, okay? General English is general English. We have to have the right attitude, right? We have to have the right mindset. Understand? Not the negative one. We have to have the positive one. Unfortunately, everyone starts from the negative attitude only. For example, 7th class, when I don't know, I don't have any grip over Telugu. When I was in 7th class, that is way back in 1977. That time I didn't have any control over Telugu. Okay. Then what I used to say, yeah, this Telugu is not my cup of tea. ये तेलुगु मेरा बस की बात नहीं है. तेलुगु इज नॉट माई कप ऑफ टी. ये मेरा पसंदीदा चीज नहीं है. एंड आई एम नॉट गोइंग टू लर्न इट. आई कांट डू इट करके लास्ट स्टेप में बैठा था. नेक्स्ट स्टेप में मैं आके मैं जब कुमारी मैडम पिंचड माई हियर, मेरा कान को नोची, क्या रे हमेशा यूर गेटिंग तेलुगु में 0. मैं उधर प्रिंसिपल मैडम का गालियां सुन रहा मैं तेरे वजह से. All students are getting 20, 24 like that, and you're getting 0, and always that principal is banging me because of you. Because of you, I'm getting shunting from that principal. करके मेरा कान नो थी, and she was favorite teacher. So then I took it to heart. Then I made another statement. First statement was what? Telugu is not my cup of tea. Means I'm not going to learn Telugu in my life. मेरे बस की बात नहीं है. That was the idea. Then second step I got up and said, when others can do it, एक सीढ़ी चढ़ा मैं आलू, नीचे का सीढ़ी छोड़ दिया. नहीं कर सकता हूं करके एटीट्यूड को छोड़ दिया और एक नया एटीट्यूड में I got into another condition of my mind. And what is that? I started saying that when Falana Ramesh can do it, Ramesh Babu can do it, Gopi can do it, Madhav Kolishetty can do it, Ratnakar Reddy can do it. These are my classmates. When they can do it, why shan't I? I can also do it. So why should I not do it? Why can't I try? करके थोड़ा इम्प्रूवमेंट में आया. आई चेंज्ड माय माइंडसेट. नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव में आया. फिर थोड़ा देर उधर बैठा, कुछ भी नहीं करा. देन आई सेड आई विल ट्राई करके और एक स्टेप ऊपर चढ़ा. मैं पहले किधर गिरा पड़ा था, मैं लास्ट स्टेप में बैठा था. नहीं आता, मैं नहीं करता. डिसाइड नेगेटिव एटीट्यूड. नाउ आई एम स्लोली क्लाइंबिंग द ladder.
आई एम ग्रोइंग इन एल्टीट्यूड, मेरा हाइट बढ़ रहा अल्लू। फर्स्ट स्टेप से सेकेंड स्टेप पे आया, वाई कांट आई करके बोला। थर्ड स्टेप में क्या बोला मैं, आई विल ट्राई करके बोला। फोर्थ स्टेप में क्या बोला मैं, इट इज वेरी हार्ड करके बोला मैं, इट इज वेरी वेरी हार्ड, मेरे को नहीं आ रहा, बट येट आई एम टेकिंग अप द चैलेंज बोल के और एक सीढ़ी के ऊपर चढ़ा। देन फिफ्थ स्टेप के ऊपर चढ़ा, फिफ्थ स्टेप के ऊपर चढ़ा और बोला कि थोड़ा थोड़ा आ रहा ना, मेरे को आ रहा ना, आई एम गेटिंग तेलुगु नो, आई एम गेटिंग इट, यस आई एम गेटिंग, आई कैन राइट नाउ, आई कैन राइट स्मॉल स्मॉल वर्ड्स। देन आई सेड आई विल डू इट, आई सेड अगेन। पहले क्या बोला, आई कांट डू इट बोला, इधर नीचे एटीट्यूड कैसा बदलते गया देखा ना, एज माई अल्टीट्यूड चेंज्ड माई हाइट चेंज्ड, माई लोएस्ट स्टेप से क्या गया, ऊपर स्टेप के ऊपर चढ़ गया। लास्ट में मैं क्या बन गया, एनुअल एग्जाम में आई एम सक्सेसफुल करके बोला, 71 मार्क्स आए मेरे को तेलुगु में, आई गॉट 71 मार्क्स इन माई कॉमन एग्जाम्स, 0 से लेके डायरेक्ट 71। So that is altitude, that is from 0 levels I got to the top, I went to the, that is depending on what, on my attitudes. Attitude नहीं बदले तो मैं ये लैडर नहीं चढ़ता था ना, the attitude doesn't change. तो इटे जर पान कना वर्तले इटे जर पिंका जर सुरा. So if my attitude hadn't changed, I could not have reached that altitude, वो हाइट्स को मैं नहीं पहुंच सकता था। जैसा कि निक व्यूजिसिक भी नीचे बैठा स्टेप के नीचे और बोला कि मेरा जिंदगी बर्बाद, मैं बेकार हूं, वेस्ट हूं, लेकिन वही निक आज दुनिया में आइकॉन बन गया। किधर का निक व्यूजिसिक, ऑस्ट्रेलिया का, उसका लेसन अपन पढ़ रहे आज इंडिया में, वी आर रीडिंग अबाउट हिम इन इंडिया। तो मेरे बारे में कोई तो भी लेसन लिखा मेरे नाम में, शेन मास्टर ग्रैंड डॉन करके कौन तो भी लिखे, कोई भी नहीं लिखा। मैं इधर इधर ही गप्पा मार लेते घूमना, दैट्स ऑल। ये 4 बच्चों के सामने बोलना कि आई एम डॉन, ये बस्ती में बोलना कि आई एम ग्रेट टीचर, दैट्स ऑल। आई हैव नॉट बिकम इंटरनेशनल ना, बट निक हैज बिकम इंटरनेशनल। ऑस्ट्रेलिया से इंडिया पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया से चाइना पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया से जर्मनी पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड को पहुंचा ना। he has moved all over the world, पूरा वर्ल्ड का भ्रमण करा उसने। लोग उसको हारा पहनाते, पैरा पकड़ते, बोलते कि वाह आदमी बोले तो तू, तेरे उतना एटीट्यूड हमारे कने नहीं है, वी आर नॉट हैविंग दैट एटीट्यूड जो तेरे कने है, वी वांट सम ऑफ दैट एटीट्यूड, वो थोड़ा एटीट्यूड हमारे को चाहिए, हम भी ग्रो होना चाह रहे। दुनिया में सारे लोग विकलांग लोग है, इतने लोग, ब्लाइंड पीपल आर देयर, deaf people are there, gunge, dumb people are there, okay, people are crippled, not having hands, legs. They say why this life, ee life enduku. Sudha Chandran was a most promising dancer of Tamil Nadu, I suppose, okay, the most promising dancer, Bharatanatyam dancer, very great dancer, chala great, 8 years के लिए she has given performance all over the country and international performance भी दिया उन्होंने, सुधा चंद्रन। तो one day they are coming in a car, so one small accident and then she got some small bruises, అక్కడక్కడ దెబ్బలు తగిలినాయి, she got some small bruises, पैरा नहीं टूटे हाथा, क्या कर रहे भाई, जाना चाह रहे। So slash www dash daily mail dash co dash uk, it's a article written in a newspaper. This is an article written in a, what is the newspaper name, Daily Mail. What is the name of the newspaper, Daily Mail करके एक न्यूज़पेपर में ऐसा ये टॉपिक है, इट्स अबाउट निक व्यूजिसिक, ओके। फिर नींद आ रही तेरे को, इसलिए 2500 डाले तेरा बाप, मिस्टर अफसर।
अक्सर तेरे को गाली नहीं देता मिस्टर अफसर, मारना शुरू कर देता. Imagine having no arms to stretch in the morning. Suppose you are born without arms. As soon as we wake up, we say like this. We stretch our body. We make our muscles active again. Inactive रहता muscle when we are sleeping. Our muscles are inactive. So they cease to work. Then as soon as we wake up, we just stretch our arms to make the muscles active. Okay. But when you are not having arms, you can't do it. You can't. So it's a very, very dangerous position. You can't stretch your arms. You're not having arms to help scratch that itch. You're having some itch somewhere. इधर की खुजली हो रहा. And it is very dangerous. चीटी काटा, छोटा चीटी, and it is itching. So खुजाना पड़ता. But you are not having arms. So what a vulnerable position. Very, very, very troublesome. Very, very troublesome. చాలా బాధ. ఓకే, గోక్కోలేం ఎక్కడన్నా బాధ అయితే గోక్కోలేం. టు అలౌ అప్ టు ర్యాప్ యువర్ ఆర్మ్స్ అరౌండ్ యువర్ లవ్డ్ వన్స్. तेरे माँ को गले लगना चाह रहा तू, तेरे बाप को गला लगना चाह रहा, बट यू आर नॉट हैविंग आर्म्स. यू आर लविंग योर मदर सो मच, यू आर लविंग योर ब्रदर सो मच, यू वांट टू शो योर अफेक्शन, अपना प्यार जताना चाह रहा बाय हगिंग, बट यू कांट hug. So what a terrible position this is. We can't express our love. We can't satisfy our physical needs. खुजा नहीं सकते, लिख नहीं सकते, दांत नहीं धो सकते, बाल को ऐसा ऐसा नहीं कर सकते. We can't do anything. We are helpless. We are. Imagine not having one hand only, it is so much troublesome. But if you are not having two arms, it is even more dangerous. Okay. Imagine having no legs now. Not only hands, you are not having legs also now. हाथा नहीं बोले तो बाप, पैरा भी नहीं है. हाथा नहीं है तो पैरा नहीं है. देन पैरा नहीं है तो क्या नहीं कर सकते, तुम्हारे को मालूम क्या नहीं कर सकते. You can't be mobile. You can't go from one place to another place. You can't go from the bedroom to the bathroom. एक ढोके लेके जाके बाथरूम में डालना तेरे को, और बाथरूम हो गए सो बाद एक तेरे धोना. इट्स वेरी 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 डर्टी. इट्स वेरी वेरी डेंजरस. इट्स वेरी वेरी ट्रबलसम. और कैकू जीरो मेर करके एक फीलिंग आ जाती है अपने को. वाई मीन्स यू आर नॉट हैविंग हैंड्स, not having legs. Then we are totally dependent on our mother and father. Totally dependent. खाना खाने से नींद तलक, बाथरूम के सारे एक्टिविटीज अपन किसके ऊपर डिपेंड होते, निर्भर होते, माता पिता के ऊपर निर्भर होते, उनके ऊपर प्रेशर डाल देते. वी पुट प्रेशर ऑन टू आवर पेरेंट्स. वी कांट डू आवर डेली कोर्स. अपना होमवर्क नहीं लिख सकते, पढ़ाई नहीं कर सकते. We can't do anything. Hands and legs are not there. We can't do anything. Life like a bee, अपन lifeless जैसा. Having life, but we are like lifeless. Having life, but we are like lifeless. जान है लेकिन बेजान है हम. क्यों बोलते हो? हल नहीं सकते, डोल नहीं सकते, पलट नहीं सकते, खड़ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते. We can't do any activities. So even having life, we are like lifeless. Okay. We can't kick pebbles down the street. We can't walk. We can't run. We can't bicycle. We can't skateboard. ये सब नहीं कर सकते अपन, legs नहीं रहे तो. और you cannot go from point A to point B. You can't move. You can't be mobile. You can't be mobile. You can't be mobile. కదలలేవు. ఓకే. దెన్ ఇమాజిన్ బోత్ ఎట్ వన్స్. బోత్ ఎట్ వన్స్ అంటే అర్థం ఏంటి? पहले हाथा नहीं है समझो बोले, बाद में पैरा नहीं है समझो बोले, बाद में क्या बोल रहे? दोनों नहीं है समझो. क्या दोनों नहीं है? हाथा नहीं है, पैरा भी नहीं है. एंड दैट इज व्हाट निक व्यूजिसिक फेस्ड
इव्स होल लाइफ, इसका जिंदगी भर ये अवस्था में थे उन्होंने। कौन सी अवस्था में? हैविंग लाइफ, जान है, लाइफलेस ही इज, बेजान है उन्होंने, हल नहीं सकता, डोल नहीं सकता, हाथ हला नहीं सकता, प्यार जता नहीं सकता, लिख नहीं सकता, पढ़ नहीं सकता। He can't do anything. He can't do anything. So the life of Nick UG6 started at the last step. जीरो स्टेप में स्टार्ट हुआ उसका जिंदगी। क्यों बोलते हो? क्या भी नहीं करे सर का उसका अवस्था थी। He can't do anything. He can't manage anything. He's not having arms. He's not having legs. And that condition is called torso. He's only a torso. He's only a हाथा पैरा नया सो। कबूतर को क्या बोलते? टॉर्सो बोलते। ही इज कॉल्ड ए टॉर्सो। निक व्यूजिसिक was born with no arms and legs. How he was born? No arms and legs. उधर से स्टॉप करके go to the next page. Go to the next page. Second para. करेक्ट बोल रहा मैं? उधर से इधर आ गया था। हॉस्पिटल में कैसा पैदा हुआ ना? हॉस्पिटल में पैदा होता है ना, कोई भी घर में भी पैदा होते समझो। कभी कभी मेरा पहली बहना घर में पैदा हुई। My first sister was born in the house only, okay, but generally they are born in the hospitals. So Nick was born how? Without arms and legs. उधर से कंटिन्यू। When Nick was born, जब निक पैदा हुआ, जमाई रानी, his father was so shocked. उसको देख के फादर शॉक हो गए। फादर was shocked. Why? Not having hands, not having legs, not having arms. He's born only torso. He's born only a torso. He was so shocked that he left the hospital room to vomit. बाहर जाके उल्टिया कर लिया उन्होंने, ची करके बोल दिया। बेटा को क्या करा? नकारा। He said, ची, what a dirty child this is. What a dirty baby is born to me. मैं इतना हैंडसम हूं, मेरा बीबी इतना हैंडसम है। Both of us are handsome. Both of us are young. Both of us are dynamic. Both of us are not having any diseases. There are diseases transmitted from the parents to children. पेरेंट्स से चिल्ड्रन को आने वाले डिजीजेस है। दोनों को क्या भी डिजीज नहीं, सो बच्चा को आने का चांसेस नहीं है। He can't get any disease from the parents, but he was born shockingly as a torso. He was born as a torso. Okay. His mother distraught. Distraught means shocked, helpless. Helpless mother. अंडरलाइन करो, वर्ड नया है तो तू जैसा इंग्लिश वाली ऐसा कर रही। Distraught mother, his shocked mother, his helpless mother could not bring herself to hold him. She could not hold him. She said, "She, dirty." It was a very, 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 very negative sign for Nick. Mother also said no. Mother कभी भी नहीं करके नहीं बोलते अपने औलाद। Mother never says no to the child. But in this case, mother also said no. I don't want this child. So dangerous conditions. So he is left to the mercy of Aya. Aya देखे तो देखता, नहीं तो मरे तो मरता ही ना। No one is taking care. No one is taking care of Nick as soon as he is born. That is the most delicate time when an infant needs the mother. Why? Means the mother is the only source of food. मदर का आसरा से चलो जीता हूं, मदर का दूध पीता हूं, जी ले सकता। अब मदर इच नहीं बोला बोलते दूध किधर की बात है? फ्रॉम वेयर विल ही गेट हिज फूड?
Mother is saying, no, I will not touch him. I hate him. He's so dirty. Never in this world it happened like this anytime. मदर कभी भी मदर ही होता, उन्होंने कैसा भी क्या भी होने दो, जब एक मदर मदर बनती, उसका तो मदर्स लव तो किसका तुल्य नहीं कर सकते. वी कैनॉट कंपेयर विथ एनी अदर लव. दैट इज कॉल्ड मदर्स लव. सो superficial love, so supreme love, that is mother's love. But unfortunately, Nick was eliminated. Nick was shunted. Nick was thrown away. Said, I'm not going to touch him. I'm not going to. All of you know very well, when your father is angry with you, he wants to come and attack you. He wants to punish you. Who will come in the way? All of you know, no? Me also, I know it. Mother will take that shots. Mother will take that punishment. She doesn't want your father to punish you. She will protect you. That is the love of the mother. So even the father went outside and vomited. The mother should say, this is my child. I'm going to look after him. But she didn't say like that. She also said, until he was 4 months old, I will not touch him करके बोली. I will never touch him. वो मेरे को मर गए तो समान. He is dead. He is dead. नको नो मेरे. Okay. Understood? That is the condition. His disability came without any medical explanation. The doctors could not give an explanation. काई को ऐसा हुआ? What is the reason? क्या diagnosis है? Why it happened like this? Why is they could not give any reasons. Reasons नहीं दे पाए. Because it is a very rare disease. It is very rare. A rare occurrence called phocomelia. This is called phocomelia. A child born without arms and legs. A child born without mother is healthy, father is healthy. Both are healthy. But the child is born as a torso. The child is born as a torso. So that condition is called phocomelia. So very rare it occurs in world. And unfortunately, it occurred to Nick. It occurred to Nick. And you can see in the photo, when he's swimming over there, in the first figure, you can see he's not ugly. He's very, very handsome. He's very handsome. Handsome, you know. He's very handsome. Galis nahi, you know. He's very handsome. He's like a hero, that fellow. But the problem is, he's not having. That's the problem. He's very handsome. Okay? He's very handsome. Alright? But the mother said no. The father said no. They left him. They left him to the mercy of the nurse. The caretakers. Okay? Nick's parents spent many years asking why this cruel trick was happening to them. ये हमारे से क्यों हुआ? ये घोर अन्याय भगवान हमारे को कई को ये मुसीबत में डाल दिया. क्रूल ट्रिक बोल तो क्या? Why God has punished us like this, giving us a child. हम कितने कितने आशा रख लिया हमारे बच्चों के ऊपर. कितने कितने मेरा माँ उसके लिए कोटा गीटा बनाई, सॉक्सा गीजा बनाए, हाथ से बुनी उन्होंने. She has done it with her hands for the child, for the grandchild. मदर कितने की सजाए घर को पूरा balloon से, all animal, all toys are there in the house ready. सजाए, वो क्रेडल को सजाए, बोले कि मेरा राजा आने वाला है. He is going to be the prince of the house. And how this fellow is born? Without arms and legs. So depressing. So depressing. बाजू वाला को नहीं बता सकते बच्चा. They can't show the child to the neighbors. और नेबर आके ताने मारना शुरू कर दी. बोल रहे कि क्या है, ऐसा पैदा हुआ, सी अच्छा नहीं है बच्चा, ऐसा बोल के और नाराज करने लगे मदर फादर. ये बाजू जो रहते ना बहुत डेंजर लोग आ रहे. दे आर वेरी वेरी डेंजरस. दे ऑलवेज ट्राई टू पुट फ्यूल इन फायर. ऑलरेडी आग लग गई, उसमें क्या डालते? पेट्रोल डाल देते और जलाते आदमी को. ऑलरेडी जल रहे बाप बेचारे दोनों. कौन? माँ बाप. इन लोग आके क्या छिड़कते? उसमें पेट्रोल छिड़कते.
और आग लगा दे कोशिश। कोई भी आके सिंपैथी नहीं दिखाता। दे वांट टू शो देयर सुप्रीमेसी, दे वांट टू शो देयर सुप्रीमेसी। सो ऐसा तड़पाने वाले आ गए घर के अंदर और तड़पाना शुरू कर दिए। और ये माँ बाप बोलने लगे, वाई गॉड हैज प्लेड दिस ट्रिक ऑन अस, हमारे ऊपर कई को प्रयोग किए भगवान, वाई इज डन दिस टू अस। मैं कुछ गलती नहीं किया मेरा लाइफ में, मेरा बीबी कुछ नहीं गलती किया, हम दोनों पवित्र जिए, पवित्र बंधन से बच्चा पैदा हुआ, फिर ये कैसा हुआ, वाई इट हैपेंड लाइक दिस करके दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स। ओके, my mother was a nurse, because she is a nurse, she has done everything correct। महीना महीना को इंजेक्शन आ लेना बेटा के लिए अपने लिए, ताकि बेटा को कुछ इंफेक्शन नहीं आए पेट के अंदर, इज सेफ, बैक्टीरियल इंफेक्शन, फंगल इंफेक्शन नहीं आना चाहिए, बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए बोल के महीना महीना को टीका रहते, माँ लेते रहती। माँ विल बी टेकिंग ऑल द डोसेस। 3 महीना से शुरू हो जाते डोसा, 9 महीने तक डोसा गिरते रहते। व्हाट फॉर, व्हाट फॉर द चाइल्ड्स good health, okay, for a child's good health, because she is a nurse, she need not go anywhere, she need not go, hospital is in her hands, hospital में एक senior nurse है उन्होंने, they all respect her, so she need not go to another hospital, spend money and get that injections and all free, everything is, so she has done everything right। when she's done everything right, the child has to be right, but unfortunately foco milia, unfortunately and she still blamed herself, she said, because of me my child is born like this, because of me my child is born like this, मैं क्या गलती करा कि मेरा बेटा ऐसा पैदा हो गया। she blamed herself। 4 months तक रोते रही तो रोते गई बाजू रूम में सो के माँ, लेकिन टच नहीं करी। बच्चा उधर है, आया उधर है, माँ इधर है, उन्हों रो रहा, इन्हों रो रही, she is crying a lot, she can't be without him, he can't be without her, दोनों नहीं रह सकते। the child without the mother, the infant without the mother, and the mother without the infant, they can't be like that, but they are being, जबरन रह रहे वो लोग, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 महीने, until 4 months she never touched him, she kept on crying here, she kept on weeping, kept on full of sorrow, asking God, why you did like this, God, to me, why you did this to the child, कई को चाइल्ड को ऐसा करा तू करके भगवान से विरोध करना शुरू कर दिया। एंड फाइनली 4 महीने के बाद नहीं हुआ उससे, बोला कि दुनिया क्या भी समझे, दिस इज माई चाइल्ड, आई एम गोइंग टू टेक हिम, आई एम गोइंग टू, सो ऑलमोस्ट इन दिस 4 months ही डाइड मेनी टाइम्स, ही केम क्लोज टू डेथ। नेगेटिव एटीट्यूड से स्टार्ट होगा इसका जिंदगी ना, he started in a negative note। माँ ही नको बोली डायरेक्ट, माँ बोली नको, ये बच्चा मेरे को चाहिए नहीं चाहिए, so it started negatively, okay, and after 4 months she embraced him, she took him and she gave lots of love, she gave him lots of love, इतना प्यार दिया कि ये 4 महीना फीका पड़ गया। she gave him a lots of love, बोला ये मेरा सबसे सुंदर बेटा है। after 4 months, okay, it was hard for them, it was very hard for them to manage me, it was hard, but from the start they did their best to make me happy and independent, they wanted to make me happy first, and they said, you don't depend on anyone, you do your own works। हाँ मेरे को हाथा नहीं है पैरा नहीं, फिर भी अपने काम तुम ही करना, you have to do your own works करके कड़क बोल दिए, you are going to be independent, you are not going to be dependent on anyone। जैसा कि थॉमस एडिसन को टीचर क्या बोला, बेवकूफ, बेहया, बेबस, लतखोर, वेस्ट करके बोल दिया थॉमस एडिसन। लेकिन थॉमस एडिसन का माँ बोली ना, मेरा बेटा सबसे ज्ञानी है, स्टूपिड है ही नहीं, एक दिन मेरा बेटा को मैं पढ़ा के रहूंगी, आई विल डू इट करके बोली।
and really she has done it. He's invented the electric bulb. He's discovered the electric bulb. He changed the darkness into light. रातों को दिन में बदल दिया उन्होंने. The great Thomas Edison. ऐसा सेम निक व्यूजिसिक को नकार दिए पहले, बट बाद में माँ बोली ये मेरा सबसे सुंदर बेटा है. बाप बोला वेरी माई चाइल्ड इज माई चाइल्ड करके बोल दिए, अपना लिए. देन दे स्टार्टेड ट्राइंग टू मेक मी इंडिपेंडेंट. वो क्या ट्राई करना शुरू कर दिए? मेकिंग मी इंडिपेंडेंट. सुन रहे मेरा बात, समझ रहे आप? यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? फर्स्ट दे सेड वेस्ट, देन व्हाट दे सेड बेस्ट, then what they said, don't depend on anyone. You never depend on, maybe you are not having arms, maybe you are not having legs, but you try to be independent करके सिखाना शुरू कर दिए. My father put me in the water at 18 months. मैं 18 months ही था, 18 महीना. आप इतने बड़े गधे 16 साल के, कितने लोग को तैरना आता पानी में? हाथ उठाओ प्लीज. किसको भी नहीं आता? You are 16 years, 15 years. He was only 1.5 years. And you should understand that he is not having hands and legs. तैरने के लिए क्या चाहिए? हैंड्स लेग्स चाहिए ना. हैंड नहीं रहे तो बैटिंग कर सकता, लेग्स नहीं रहे तो फुटबॉल खेल सकता. कैन यू? हाथा पैरा नहीं ले तो स्विमिंग करता तू. बट ही इज स्विमिंग. He is a great swimmer. Nick is a great swimmer. अब पीछे आ जाइए, फिर go back. What else he can do? अब रोक दिया ना, उधर से स्टार्ट फिर. That brave 26-year-old who is mainly torso, कैसा है? torso. पीछे गए, इसलिए मैं काट के उधर गया, फिर इधर आ रहा. स्विमिंग करना आता उसको. कितने महीने में स्विमिंग करना शुरू कर दिया? ओनली. एंड ही इज नॉट हैविंग हैंड्स एंड लेग्स. देन हाउ ही इज स्विमिंग? कम ऑन, विल सी हाउ ही इज स्विमिंग. ही प्लेज फुटबॉल. अयो पैरा नहीं है, फुटबॉल कैसा खेलता रे? खेलता. इंडिपेंडेंट. फादर हैज मेड देम इंडिपेंडेंट. फादर और मदर उसको क्या कर दिए? एंड ही कैन प्ले फुटबॉल ऑल्सो. ही कैन प्ले फुट में है फुट. फुटबॉल में है फुट. फुटबॉल से क्या खेलते? फुटबॉल किससे खेलते? फुट से. इसको फुट नहीं है, फिर भी फुटबॉल खेलता. फिर भी हाँ गोल्फ खेलता. गोल्फ बोल तो छड़ी से बॉल को मारना, पट में गिरना. పట్ విల్ బి దేర్. ఒక పెద్ద రాడ్ ఉంటుంది, కొడతా, చిన్న బాల్ ని కొడతారు, అది పోయి అలా పడాల. దట్ ఈస్ గోల్ఫ్. వితౌట్ హ్యాండ్స్ హౌ కెన్ యూ ప్లే గోల్ఫ్? హౌ కెన్ యూ? But he plays golf also. He plays golf. Isn't it a miracle? ये मिरेकल नहीं होता? मिरेकल होता. हाथ नहीं सो गोल्फ कैसा खेलते? हाथ नहीं सो पेन पकड़ के कैसा लिखते? डिग्री करे नो. He has done his degree. अच्छे मार्क्स से पास हुए नो. ओके, he passed with high marks. ओके, he swims. स्विमिंग करते. he surfs. सर्फिंग करना मालूम? एक सर्फ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म रहता, स्की रहती, पानी में डाल के उसके ऊपर चढ़ते और जाते रहते पानी में. ऐसा कटिंगा मारते. नेवर सीन दैट चैनल्स, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल, स्पोर्ट्स चैनल्स. पानी में ऐसा सर्फिंग कर लेते जाते. हाँ, थर्ड फिगर वी आर हैविंग इट. सर्फिंग कर रहा हूं. ओके, ही कैन सर्फ. How is it possible? Next para. Nick has a small foot on his left hip. ఇక్కడ హిప్, इसको హిప్ बोलते. ఏ జాయింట్ కు దిస్ జాయింట్ ఈస్ కాల్డ్. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇట్లున్నది, ఒక చిన్న కాలు చూస్తారా మీరు? అక్కడ నీళ్ళలో కనబడుతుంది కాలు. యూ కెన్ సీ ఏ స్మాల్ లెగ్ ఓవర్ దేర్. రైట్ కు లెఫ్ట్ కు అంది. లెఫ్ట్ కు
हाँ लेफ्ट को, तुम्हारा राइट उसका लेफ्ट है, समझ में आया ना, समझ में आया ना, योर राइट इज लेफ्ट. ओके, he can write, he can pick up things, he can kick, he can do everything with that chicken drumstick. So the chicken drumstick is the only support for him. The small left foot is there, small one is there. अपन थाई पीस करके बोलते होना बोल के, चिकन का थाई पीस, मुर्गी का थाई पीस करके बोलते, खुद तो भी क्या क्या करते, थाई पीस होना करके बोलते, दे वांट द थाई पीस. उसका ऐसे एक थाई पीस है उसके, इज हैविंग ए थाई पीस, स्मॉल वन. ओके, that is his only, that is his only assurance, that is his only support. With that he can do everything. What he can do? What is that everything? Swim, surf, scratch, everything he can do, pick up things, write. So he's not writing with the hands, Miss Swapna. He's writing with the that with that small chicken drumstick. He's doing everything with the chicken drumstick. Okay, understand? Write with a pen. You can see there, Miss Mohammadi. He can write with a pen using the small foot, not with the lips. मुंह से नहीं, मुंह से ब्रशिंग कर रहा हूं ना, ब्रशिंग कर रहा, ब्रशिंग, he is brushing, he is doing some not, he's, that is not writing, it's not writing, he is doing some I mean to say some drawing he is doing with the mouth, but writing is doing with the this one, with this one. इधर देखो, he has a, अरे तेरे को आंखा है ना, तो अंधी नहीं है ना, सेंटेंस सुनो. Nick has a small foot, Nick has a small foot, which helps him, क्या क्या हेल्प करता, बैलेंस, enables him to kick, he uses his small foot to type. किससे टाइप कर रहा भाई, मुंह से, तू मुंह से बोल रही, किससे नो कर रहा, तू क्या बात कर रही मोहम्मद. he is doing with the foot, he is typing with the foot. Write with a pen, with what is writing, muh or foot, everything is doing with that foot only, understand. And pick up things, कुछ उठाना, उधर रखना, इधर रखना, तो अपन हाथा से करते, उसको हाथ नहीं है ना, he does it with the foot. And that small foot is called, I call it my chicken drumstick. उन्होंने क्या बोल रहे, that is my chicken drumstick, that is my chicken. ఏమైంది, అయిపోయింది. So all this he can do, he became independent na, he became independent. I also got, next page mein, I also got really into football and skateboarding. I love the English Premier League. Nick's father was a computer programmer. What is his job? Computer programmer, a big job. And accountant, अकाउंट्स भी रखते हो, हिसाब किताब, बड़ा कंपनी में, इज द अकाउंटेंट. एंड ही टॉट हिज लिटिल सन हाउ टू टाइप विद हिज टो. टाइप करना किससे, उंगलियां से, फिंगर्स नो, टो, उसको टोज बोलते, इसको फिंगर्स बोलते. पैरा का उंगलियां को क्या बोलते, टोज, ये फिंगर्स बोलते उसको. तो अभी मोहम्मदी को समझ में आ गया किससे टाइप कर रहा हूं, किससे टाइप कर रहा, टो से, with the toe. At just 6 years old, his mom invented a special plastic device. उसका माँ एक डिजाइन करे एक प्लास्टिक डिवाइस को. With that what he can do, he can hold a pen and a pencil with his foot, not with his mouth. Don't get confused. मार्का जाते, 89 आना अलग है, 90 आना अलग है. 90 comes under 10 grade, 91 comes under 10 grade, 90 comes under B grade, 91 comes under A grade. Grades are there, you can see. Okay, if you have to get A1 grade, it has to be 91.
If you get 90, it will come to the lower grade. So that 1 mark we cannot be losing. We cannot be losing that. पैसेजेस में क्वेश्चन आंसर्स आते, पहले पहले पैसेज आता, क्वेश्चन आंसर पूछते मोहम्मदी को, और मैं बोलती मुंह से लिखता हूं, तो गया ना मार्क। मुंह से लिखता या पैरा से लिखता? पैरा या पैर? पैर का नाम क्या है? चिकन ड्रमस्टिक रे, उल्लू के पट्टे। ही कॉल्ड इट चिकन ड्रमस्टिक। सुन के भी नहीं सुने, बेरे लोग है तुम लोग। और उसका नाम क्या है? वो फुट का नाम क्या है? लेग है उसका ने। ही इज हैविंग ए लेग, वन लेग है क्या? व्हाट इज हैविंग ए स्मॉल फुट, छोटा सा, बतख को है सर का, छोटा सा बतख का पैर देखा है ना, ऐसा ऐसा पैर है। जब से तो उसको खुजारा, क्या खुजारा की नहीं मालूम, जब से पैर से खुजारा, हाथ से खुजारा, वही देखते तू सोच रहा मैं नहीं देखू। मिस्टर हजाम, तेरा हजामत कर दी तू।